तलवार सबके पास होती है पर तलवारबाजी सीखना पड़ता है। डायलॉग। चलो लेट्स स्टार्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है कि लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस। पेन कॉपी लेके रेडी, we will write this, okay, but let us understand this. Suppose if there is a body, a stone is picked up, stone ले लिए। Now there will be different particles comprising of this stone. Stone कैसे बनता है? Particle like dust particles, I mean stone particles. Okay. Now each and every particle will have their weight acting downwards. Like this particle would be having its weight downwards. Okay. Now, these weights of these small particles are forces. Weight money ki force. So we can say that there are so many small particles which are experiencing a force downwards, and those forces are nothing but their weights. Suppose this is the first particle, it will have a weight W से represented होता है। first particle का weight को लिखो W1. Suppose this is second particle would be having a weight W2. Just like this, there are n particles, n means anything, so this would be having Wn as its weight. Now all these weights are acting downwards. Now my question is why weight is not acting upwards? Because there is ground below them. Ground means, if we want to be more precise, so ground means what? Earth. And earth pulls all the particles with the gravitational acceleration towards its center. That is downwards. Then if we consider a point, say over here, let us say a point P. Now the moment of all the forces, moment किसका होता है? Forces का होता है। Moment of all the forces, भाई force कहाँ है? The weights are force. Weight is a force by nature. So these forces, these arrows, moment of the forces, look at this with respect to P. If I consider this force, moment of this force would be in this direction, that is clockwise. And think about this point. If I draw another point here, point 2, and if there is a downward force, moment of this force at 2 about the point P would be clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Yes, right answer. How to understand that? We have had a discussion about this in the last class. और एक बार बता दे रहा हूं भाई, फोर्स के लिए मोमेंट या तो घूमने वाला चीज इधर होगा नहीं तो इधर होगा। अब P पॉइंट किधर है? राइट साइड, तो we will consider right side arrow. That means it should be in this direction. So we understand that about a point P, all the forces acting on the right side will create clockwise movements, while all the points on the left side will create anti-clockwise movements. So there may be a point P about which the sum of all clockwise movements will be equal to sum of all anti-clockwise movements. Can you tell me which principle is this? Just I have told you, the sum of all clockwise moments equals to sum of all anti-clockwise moments. Huh? Principle of movement. Very good. Principle of moment. So if this principle of moment is obeyed, then what happens? अरे body गायब हो गया। If this principle of moments is followed, then the body remains in equilibrium. Okay, then P should be a point about which moments of, देखो मैं लाइन खींच रहा हूं ऐसे, moments of all the forces on the right side of P, that is clockwise, should be equal to the moments of all the forces on the left side of P, that is in this side. So these two moments will cancel each other and the body will remain at Shanti, on a rest.
So that point would be called center of gravity, the point about which sum of moments on the left side and right side is zero. That means net moment is zero. Simple thing. The point about which the net moment of all the forces. Now, what are the forces acting here? The weight of individual particles is zero. तो उस पॉइंट को बोलेंगे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सिंपल माने बोलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर सेंटर मानेंगे. Center means the whole body is assumed to be concentrated at a point. कौन सा point? Center of gravity. Such that we can assume the weight भाई कितना weight करेंगे? Weight का इंतजार खत्म हुआ. That means all the weights W1, W2, W3, W4 करते करते Wn. If you add all the weights of different particles, we will get the weight of the whole body. Let us call it W. So we may assume that the total weight of the body constituting of all the small particles is acting from this very point, center of gravity. That means in place of drawing all these small forces, that means weights of individual particles, we can do this thing. We can draw a body, and if we know that this is its center of gravity, means gravitational pull, that means weights. If we know that this is its center of that gravitational pull, that is center of gravity, then we can draw a single arrow which depicts the sum of all these weights of the particles, and we can write that sum only. So this picture little clumsy. This is a clear picture, helps us to understand, calculate things. Now let us go to the definition. Now I am telling you the definition, and now after understanding this, you start writing. What I am underlining this. See, this is the thing. Let me take a white. No, color choice के लिए मैं थोड़ा ठीक नहीं. The center of gravity, that is CG, of a body. Okay, body means the bigger, larger objects are generally called body, and small things are called particle. But this idea will change later in your class 11th at the very first chapter. Particle does not mean always to be very small. It doesn't. We'll learn that in class 11. But here, class 10, 9, we will assume that particle means small objects, and body means combination of those small objects, that is a bigger one. Okay. So center of gravity of a body is a point. बोलो तो कौन सा point? ये P point is a point. Okay. About which क्या होगा? ओए बुकिश लैंग्वेज आएगा. क्या? Algebraic sum. भाई ये क्या है? ये. Just now I have written the algebraic sum of moments. यहाँ पे मैं weights लिखा हूँ. Actually they should be force, that is weight, into perpendicular distance d. Force into perpendicular distance d. तो उतना लिखने का जरूरत नहीं. Simple इसका माने है कि sum of the moments of weights, बोला था clockwise moments and anti-clockwise moments, of the particles. कौन सा particles? Constituting the body, जो लेके बॉडी बना है, is zero. बस हो गया. इसका इनडायरेक्ट मीनिंग तो वही हुआ ना, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, जीरो. दैट मींस ये ना इधर घूमेगी ना उधर. दैट मींस ये रेस्ट में रहेगा. तो ऐसा पॉइंट ढूंढो. फाइंड अ पॉइंट अबाउट व्हिच सम ऑफ, मैं लिख रहा हूं देखो टर्म्स, सम ऑफ किसका सम? फोर्स ना मोमेंट. किसका सम? मोमेंट्स. सम ऑफ मोमेंट्स. अब किसका मोमेंट? मोमेंट तो फोर्स का होता है. यहां पे सिर्फ स्पेशली क्या बोलेंगे? हमने कहा स्पेशली की बोलबो, मोमेंट ऑफ फोर्स ना बोले की बोलबे वेट. वेट्स. किसका वेट्स? ये डॉट 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 ये सब क्या है?
पार्टिकल्स, कौन सा पार्टिकल, जो लेके ये बना है, दैट्स इट, कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। हाँ फिर ठीक है, उसका क्या होना है फिर, ये सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स शुड बी इक्वल टू 0। नाउ आई एम रिमूविंग दीज एनोटेशंस और लेट इट बी हियर, लेट इट बी हियर। एक बार लिखे ना, आई विल आस्क यू एंड यू हैव टू आंसर इट। अभी पढ़ेंगे, अभी सीखेंगे, यू हैव टू लर्न राइट नाउ। देख के रख दिए कि अच्छा ठीक है बाद में देख लेंगे, आईसीएसई फाइनल आने दो या तो माई एग्जाम आने दो। नो, वी आर नॉट स्टडिंग एक्चुअली फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स तो सीखेंगे ही सीखेंगे, वी वांट टू गो बियॉन्ड दैट। अभी क्या, अभी इसको याद करो। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सीजी। चलो नाउ लेट अस मूव फास्ट फ्रॉम एक्चुअल लेक्चर, let us move to this second page. I have made these things for you and it takes time to do this. The position of CG depends on shape. Shape का ऊपर depend करे माने, माने we took a lump of wheat, आटा नहीं ले, आटा ऐसे पानी थोड़ा देके ऐसे करके गोला बनाया आटा का। अब वो आटा का गोला उतना ही है, it has the same mass, but you changed its shape by twisting it, pulling it, shape change कर दिए। Will its center of gravity point change? Yes, because you have changed the shape. इसके ऊपर short question आता है first point के ऊपर। I have briefed the whole chapter, this part of the chapter, briefed, at least इतना करो, you can answer all questions. और जो additional discussions हो रहा है, I am recording this class for you. I'll be giving it to you. Later time, you may revise your chapter. So anyway, but rely on yourself. Recording के ऊपर rely मत करो, सीखने के ऊपर करो कि now if you change the shape of a body, the position of the center of mass of the same body will change. Why? Because mass distribution changes. Mass distribution. Suppose I am giving স্যার you an একবার example. রিপিট করবেন? Repeat position. Mass distribution changes. Point কি ছিল? If we change the shape of a body, its center of gravity will change. सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बेसिक आइडिया बोलो, बेसिक आइडिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिडिल पॉइंट होता है। सेंटर, सेंटर का माने क्या है, मिडिल पॉइंट। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द मिडिल पॉइंट। तो देखो, तो इफ दिस इज अ बुक, तो क्लास 11 बुक है, पतला सा एक पार्ट है, सिर्फ पूरा पार्ट नहीं है, देयर आर 3 पार्ट्स लाइक दिस। एनीवे, सो सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बुक, सेंटर में होगा कहीं पे, इसका बीच में, यहाँ पे इट विल बी समवेयर एट द सेंटर ऑफ ये बुक का, यहाँ पे होगा, मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे होगा, आई एम शोइंग यू बाय माय फिंगर, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मिडिल पॉइंट सेंटर में। आई एम चेंजिंग द शेप, ये लो, ये अब चेंज द शेप ऑफ द बुक। कैसे? अभी ये छोटा सा रेक्टेंगल था, आई मीन क्यूबॉइड, अब ये ऐसा हो गया, फैल गया, स्प्रेड कर गया ये, तो एज इट स्प्रेड्स अप, तो इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। इसको मैं अगर ऐसा कर दिया, ये बुक को ऐसे लो, ऐसे कर दिया, नो, I've changed the shape of the book like this. Now center of gravity will shift, change हो जाएगा। तो if you change the shape of a body, ऐसे कर दिया ना, ऐसे, its center of gravity will shift, change हो जाएगा। पॉइंट तो समझ लिया, दिस इज ओनली एन इंफॉर्मेशन, ओके वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि इफ यू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, तड़ोड़ मड़ोड़ के, ओके इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट, बट वेयर, व्हिच डायरेक्शन, हाउ मच, वुड बी मेजरिंग देम इन योर लेटर क्लासेस। बट एक आइडिया अगर मैं बोलूं कि दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट ऑफ द बॉडी, বডির হেভিয়ার পার্ট যেদিকে থাকবে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ওই দিকে শিফট হয়ে যাবে। পয়েন্ট, আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার। ফার্স্ট পয়েন্ট, ফোকাস অন দিস। ইফ শেপ চেঞ্জেস, দ্যাট ইজ মাস ডিস্ট্রিবিউশন চেঞ্জেস, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি চেঞ্জেস। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या, इट में लाई इवन आउटसाइड द बॉडी। ये कैसे, कैसे मटेरियल जहां पे रहेगा उसी का सेंटर होगा, तो ये ना ना ना, इट मे नॉट बी।
साइकिल ए टायर और ट्यूब ऑफ अ साइकिल, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है शुरू में कौन है, सेंटर, कहां पे होगा, सेंटर में. सो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई एट द सेंटर. अरे इसका सेंटर में कुछ है क्या, सपोज इफ यू हैव टेकन अ रबर ट्यूब लाइक दिस, तो इट्स मटेरियल इज हियर, दिस इज रबर एंड दिस इज हॉलो पार्ट, अंदर कुछ नहीं है खाली, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल एक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. So second point is that it may lie even outside the material of the body. If they ask for example, give example of a circular ring, circular tube. You know what circular tube shape is called? Those who do mathematics, love mathematics. Torus. So anyway, otherwise circular ring has its center of mass outside the material of the ring, that is at the center where there is nothing, no material. So that was the second point. And here comes the third point, that is this one. The entire weight of the body, I told you earlier this point, the entire weight of the body can be assumed to have concentrated at that very point. पूरा का पूरा मास है W1, W2, W3, W4. अब बैठ के हम लोग क्या पार्टिकल्स गिनेंगे उसका कि हाउ मेनी पार्टिकल्स लेके ये बॉडी बना है, नो. वी विल जस्ट आस्क द बॉडी, भाई साहब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, वो बोल देगा स्माइल करके कि मेरा यहाँ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बस वी विल डू व्हाट, वी विल ड्रॉ द बॉडी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मिल गया एंड वी विल ड्रॉ अ सिंगल एरो, दैट इज द टोटल वेट ऑफ द बॉडी. कहां से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. दैट इज द थर्ड पॉइंट. माने को समझो. नेक्स्ट पेज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट पेज, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन निकालना है फॉर डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट शेप्स. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर डिफरेंट शेप्स, अभी बोले ना इट डिपेंड्स ऑन शेप्स. चलो CG फॉर डिफरेंट शेप्स, हेडिंग डाउन, एंड दिस इज अ थिंग दैट वी विल बी डूइंग टुगेदर. मैं भी करूंगा. अब बोलोगे सर आप तो बना के रखे हैं पहले से. हाँ तो मैं बना के रखा हूं, आई हैव डिवोटेड सम टाइम, यू आल्सो डिवोट सम टाइम, आई एम वेटिंग फॉर यू. सर्कल ड्रॉ करो, এটা নাম দেবে সার্কেল. এটাও তো সার্কেলই, নো দিস ইজ আ ডিস্ক. একটু শেড করে দাও, এমনি করে শেড করো, তাহলে কি হয়ে যাবে, ডিস্ক. तो दिस इज अ सर्कल, दैट इज सर्कुलर रिंग, अंदर कुछ नहीं है, ये डिस्क है सॉलिड, खबर थाला था प्लेट खाने का वो. अब क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने का सेंटर है, दैट शुड बी द सेंटर. एंड समवन सेड कि इट शुड बी एट द सेंटर फॉर अ रेगुलर बॉडी. इसका क्या माने है बोलो तो, रेगुलर बॉडी mass distribution is uniform along the length or along the area or along the volume of that body. एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसा आएगा, मार्क कॉपी द डायग्राम, ऐसा लिखेगा. उसका बाद ये बोलेगा मार्क पोजीशन ऑफ CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन मार्क करो. तो ये मार्क कर दिया, तो बिंदी लगा दिया क्या, ऐसे कर दिया, मार्क कर दिया. अरे फिजिक्स है, फिजिक्स मैथ्स दोनों को मिलाओ. क्या, यू हैव टू शो बाय लॉजिक हाउ दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हाउ यू फाउंड दैट सेंटर. भाई कुछ नहीं, ऐसा कर लेंगे, ये लगा इसको, ये कौन हो गया, सर्कल का कौन हो गया, डायामीटर. ये लगा इसको, ये कौन हो गया, अनदर डायामीटर. भाई डायामीटर, डायामीटर कहां कट करेगी, सेंटर. So you have to draw two diameters for that to mark Mark Zuckerberg. Say mark to mark the center. ओ मत लिखना, इसको लिख देना CG. इसके लिए क्या होगा, सेम, एकदम सेम करो.
ये डायमीटर ड्रॉ कर दिया इसका, ये डायमीटर ड्रॉ कर दिया इसका। मन में क्वेश्चन आ रहा है मेरा पिक्चर एकदम परफेक्ट नहीं हुआ तो डजंट मैटर, उसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू ड्रॉ दिस विथ प्रॉपर स्केल। रफली ड्रॉ करो विथ लॉजिक। टू डायमीटर्स जहां पे कट करेगा दैट शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। नेक्स्ट पेज, इसमें आ जाओ। तो क्या दिख रहा है, शेप्स क्या दिख रहा है, शेप्स दिख रहा है ट्राइंगल, शेप दिख रहा है स्क्वायर, एंड देयर इज अ रेक्टेंगल। तो आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, जस्ट आंसर दैट। अगर बोल नहीं रहे हो एटलीस्ट यू आंसर योरसेल्फ कि आई नो दिस। कैसे, इफ आई नाउ ड्रॉ दिस, ढिचक्याओं करके ढिचक्याओं कर दिए, ये ढिचक्याओं एंड ढिचक्याओं, तो इसका नाम क्या होगा? इफ आई ड्रॉ दिस व्हाइट लाइन, I have Sir, drawn this median. white line. What should be the Sir, name of this white median. line? बोल दो and then you Yes. proceed. मीडियन बोलो क्यों बच्चों? Median, sir. मीडियन Median. Median. Yes, 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 right. Median. सर एक बार वही बोलो बोलो. बाकी দুটো যে অ্যাঙ্গেল মানে পয়েন্ট ভার্টেক্স নাম গুলো আছে মনে ওখান পড়ছে থেকে না পাগল. একটা মিডিয়ান Vertex. তিনটে মিডিয়ান আসতে হবে ভার্টেক্স থেকে Vertices. হ্যাঁ তিনটে মিডিয়ান থেকে সেন্টারটা হলেই দাঁড়াও দাঁড়াও সেন্টার দাঁড়াও. অফ গ্র্যাভিটি কোথা থেকে ড্র করবো সোমক বল, কোথা থেকে ড্র করবো? Which point should I draw? ভার্টেক্স হ্যাঁ, Vertex. এইরকম হতে হবে। Yes, confident. This is another vertex. I touched it. टच करने से कैसा हो जाता है? ढींच के हो, इसलिए। And now I have drawn another median. And finally, this one. क्या दिख रहा है? तो now draw it. चेष्टा करो तो how can we find the position of the CG of this square shape? Air center of gravity intersection कितना? of intersection of the diagonals. Nehan answer. Oh my goodness. Oh, very good. Hitchcam and another Hitchcam. Very good. This should be that point. CG. Nehan. Sir, Where? I'm not quite sure about this, but দেখে মনে হচ্ছে it should be the same as the Very square good. Oof, কাছে থাকলে তো ব্যাটিং করতাম। Very good, I'm very happy. That's it, and I hope everyone is getting this or got that. ढिचक्याओं and ढिचक्याओं। एग्जाम हॉल में ना ये सब लैंग्वेज याद नहीं रहेगा, पर क्या याद रहेगा? ढिचक्याओं याद है। तो चलो, this is CG. मजाक कोई कब कर सकता है? তোমাদের কাছে এখন এটা সিরিয়াস লাগছে, কখন মজা লাগবে জানো? when you become confident about this, তখন তবে তোমরাও ঢিচকাওই বলছো। I mean, don't say that, just मजाक कर रहा था। तो anyway, next page, I hope you understood this. next page में क्या है? शेप कौन सा है? पैरेललोग्राम। निहांत थ्योरी लगाची, ढिचकाओ and ढिचकाओ, intersection of the diagonals। फिर से ये सीजी, ये कौन है? सिलेंडर, सिलेंडर। Sir, at the midpoint of the axis of the cylinder. Very good, very good. At the midpoint of this axis। क्यों भाई? एक्सिस का रेस्पेक्ट में, लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, एक्सिस का रेस्पेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, चारों तरफ यूनिफॉर्मली मास है। So mass distribution has been uniform about this axis. That means कहीं ना कहीं ये axis का ऊपर होगा। As the mass distribution is uniform, the axis का ऊपर तो होगा ही और सेंटर में होगा, मिडिल पॉइंट। तो ऐसा हो सकता है क्या? एक्सिस का ऊपर हुआ पर सेंटर में नहीं हुआ? हाँ, if the mass distribution is not uniform, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हो गया, ऐसे कैसे? बाहर गए थे घूमने, bought a cornetto ice cream chocolate flavor, cornetto chocolate flavor. This is a cone. If the cone was like this,
ऐसा अगर होता तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस लाइन वुड हैव बीन यूनिफॉर्म, इधर भी जितना मास है एंड ऑन द अदर साइड सेम मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो सिलेंडर के लिए है, इसके लिए है द मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस साइड इज इक्वल टू द मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस साइड। गारंटी क्या है? अरे देखने में यूनिफॉर्म लग रहा है, इसके लिए नहीं है। क्यों? ये तो सिलेंडर नहीं है। कौन है ये? कॉर्नेटो आइसक्रीम। कैसा शेप? कोन। तो फॉर अ कोन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई अबाउट दिस, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड में जितना मास है राइट साइड में उतना ही मास है। दैट इज ट्रू। तो क्या ट्रू क्या नहीं है? ট্রু কোনটা নয়? ট্রু এইটা নয়। মাঝখানে মিডলে থাকবে না। হ্যাঁ, মানে ট্রু এইটা নয় যে বেস যেখানে আছে বেস सर কর্নেটোর बॉडी বেস, यूनिफॉर्म ना। হ্যাঁ বেসটাতে মাস যতটা আছে as you move up मास इक्वल है पर उतना नहीं है जितना नीचे है। অতটা মাস নেই নিচে যতটা আছে। এইবার বলো কোথায় হবে আমি জানতে চাইছি না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু রিমেম্বার those informations कि I know this is the formula or this is the answer. I don't want to ask that. मैं ये चाहता हूं कि लॉजिक डेवलप कर रहा है कि नहीं। Did I tell you earlier that mass distribution जैसा होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे होता है। मैं क्या ये बोला था कि भारी चीज जिधर होगा उधर शिफ्ट कर जाएगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट। अब बताओ विथ रेस्पेक्ट टू दिस मिडिल पॉइंट, चलो मैं मिडिल पॉइंट को यहां पे ड्रॉ करता हूं। सपोज दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ दिस कोन। मैं कॉर्नेटो आइसक्रीम को हाफ कर दिया लेंथ के हिसाब से, लेंथ है हाफ। अब बोलो तो इसका अपर पार्ट में ज्यादा मास है कि लोअर पार्ट में ज्यादा मास है? व्हिच पार्ट हैज इज हैविंग मोर मास? वन और टू? लोअर पार्ट, हाँ लोअर पार्ट, the lower part. लोअर पार्ट। अच्छा लोअर पार्ट, आई गॉट इट। लोअर पार्ट दैट इज पार्ट 2 इज हैविंग मोर मास। तो टेल मी ये जो मिडिल पॉइंट है ना, इफ दिस इज अ टोटल हाइट ऑफ h, कॉर्नेटो आइसक्रीम का टोटल हाइट h है, सॉरी कॉर्नेटो आइसक्रीम का टोटल हाइट h है, तो ये बता दो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट विल बी more than h by 2 or less than h by 2 from base। base থেকে h by 2 মানে middle point, so its center of gravity would be more than h by 2 মানে লাইনটা হচ্ছে h by 2 half height। more than h by 2 কি less than h by 2? where should it लेस CG देन h/2। लेस देन 8 The less than h by अरे two. वाह, than h by very good, very good। now you will remember this। how much less? h by 3, because unless we learn integration I cannot show you how that happens. But as I told you, after completing the syllabus, when we will be revising, then I'll definitely show you, because before you end class 10 syllabus, we will learn integration differentiation. Higher level thoda pehle se seekh ke rakhenge. Anyway, but I'm very happy that you are getting the ideas. মুখস্থ না, আইডিয়াটা বোঝো কিরকম। This is the middle point. So its center of gravity should be somewhat less than the middle point. Why? Because heavier part is concentrated downwards towards the base of the corner ice cream. So here should be its CG. So h by 2 is this middle point. अच्छा h by 2 থেকে আরো কম কত হলো এটা? h by 3, h by 3, but this is wrong। কেন wrong কিসের হলো? let me create a page for you। চলো পেজ ক্রিয়েট করো। কিসের wrong হলো? মুখস্থ করো না, বোঝো। if this is a cone, now draw this with me। চলো সৌমিক ড্র করো। স্যার ওই স্ল্যান্ট হাইটের জন্য না না আমি কেসটা ডিফারেন্ট বলছি, আগে কোন ড্র করো। হ্যাঁ আচ্ছা এটা একটা কোন, কেমন কোন? हॉलो कोन। आइसक्रीम खा लिए भाई,
टॉर्नेडो खाली हो गया तो क्या बचा? ओनली द कप, hollow cone. Then it's right whatever is given in your book. बुक में क्या दिया हुआ है कि CG would be at a height h by 3 from the base. h by 3 सिर्फ लिख के मत आना, कहां से h by 3 वो लिखना। मैं नीचे से अगर h by 3 हुआ, ऊपर से कितना होगा? If the total height is h, total height of this cornetto ice cream is h, তাহলে নিচের থেকে যদি h by 3 হয় from the base, তাহলে from this vertex উপর থেকে কতটা হবে নিচে? Remaining part 2h by 3. 2h by 3. Yes. 2h So by 3. 2h by 3. So when you write the answer, please write from where you mean to say this height. তো এটা নিচে লিখে আসবে from the base. But what I was talking about was this. Draw করতে থাকো hollow cone. साइड ए लिखो सॉलिड कोन। सॉलिड कोन माने आइसक्रीम भरा हुआ है पूरा, कॉर्नेटो आइसक्रीम जिंदा है, न्यू कॉर्नेटो आइसक्रीम, वही चॉकलेट फ्लेवर सर। नाउ इट्स CG would be फर्दर बिलो, और नीचे हो जाएगा। And this time it would be h by 4. Jana, you will 11, just next year you will be again having these things in great detail. তখন তো इंटीग्रेशन করে বানাতে হবে এগুলো, you have to show them. तो कम से कम याद तो रख दो, शॉर्ट क्वेश्चन भी काम आ जाएगा, क्लास 10 भी क्लास 11 भी। LIC डायलॉग है जेटा नहीं, LIC जिंदगी का साथ भी माने सॉरी क्लास 10 का साथ भी, क्लास 10 का बाद भी। तो चलो, now let us be enlightened by हितेश। अच्छो हितेश শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার। হিতেশ বলো হলো কোন পজিশন অফ সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কোথায়? হলো h by 3 from base. সলিড কোন? h by 4 from base. Very good, very good, happy, very good. Solid cone, hollow cone. Now I can move to the next page. Shanti se. A body can be balanced in equilibrium. A body can be balanced in equilibrium by supporting it. ये सपोर्ट करवे किसे? भोटे बोलছি, भोट में सपोर्ट नहीं, कहां पे सपोर्ट करना है? By supporting it at its CG center of gravity, and that is the main thing. इतना पढ़ाई किस लिए? क्लास 10 पास करने के लिए भाई, और आगे चल के कहीं पे काम आएगा क्या ये सब जान के? कुछ লাগে না মনে যেগুলো জেনে কি যে লাভ? সিজি কে সাপোর্ট করবে একটা পয়েন্টে, লাভ কি? লাভ দেখবে। आई एम ड्राइंग गंगा रिवर और से समवेयर एल्स, क्योंकि अभी डेप्थ कम हो गया है। एनीवे, सो दिस इज द रिवर, दिस केम अ शिप, शिप में आया कंटेनर। यू वेल अंडरस्टैंड व्हाट कंटेनर इज। कंटेनर चाइना से आया, मान लो बहुत सारे लैपटॉप्स भरा हुआ बिग कंटेनर। हैव यू सीन दोस लॉन्ग ट्रक्स कैरिंग सम बॉक्स लाइक थिंग? दैट इज कॉल्ड अ कंटेनर। नाउ दिस कंटेनर is to be lifted by means of a jeep crane. This is called a jeep crane. You maybe you have seen it when you travel through Vidyasagar Setu over Ganga. You can see those cranes mounted by the sides of the river. So this is having a bottom block. This hook is called a bottom block, this hook. And by means of this hook, this crane will pull this container, and there is a truck waiting for it. यहाँ पे ट्रक है, वेट कर रहा है।
लेकिन ये ट्रक अभी खाली है, ऐसा. Now this container will be lifted by this crane and put on this truck so that it is now loaded. स्टोरी तो अच्छा है, बट द क्वेश्चन इज इससे सीजी का क्या मतलब, ये चैप्टर का क्या मतलब है? बहुत मतलब है. इफ दिस इज दैट कंटेनर, वेयर वुड यू प्लेस दिस हुक और बोल्ट सिस्टम, जहां पे पकड़ के उठाएंगे? यहां पे এইখান থেকে যদি if you pull it, यहां से अगर उठाओगे ये हिस्सा तो झुक जाएगी ऐसे at the midpoint. हाँ, At the point where the CG is acting from base. वेरी गुड. बिकॉज मे बी अंदर जो लैपटॉप है ना वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे यहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, यहां पे 4 बक्सा है अंदर, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4. नाउ सोचो तो थोड़ा, अगर ऐसे रखा हुआ है, मैं क्या बोला था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है? हल्का पार्ट के तरफ कि भारी पार्ट के तरफ? हल्का दिखे ना भारी दिखे? हेवियर साइड, हेवियर साइड. तो चांसेस आर कि इट्स हेवियर बट लाइज, ये अगर मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट का इस साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ज्यादा भारी चीजें हैं, तो इट मे बी समवेयर ओवर हियर. सो यहां पे और उस साइड से ऐसे दो, इसको बोलते हैं जिग्स एंड फिक्सचर्स. इंजीनियरिंग में पढ़ो हाउ टू मेक दिस थिंग्स. नाउ फ्रॉम हियर क्रेन का ये हुक ऐसे लगेगा यहां, ये हुक, एंड नाउ व्हेन यू लिफ्ट इट अप, ये सीधा उठेगा और सीधा जाकर ट्रक का ऊपर बैठ जाए. मतलब माने समझ रहे हो? ये माने नहीं समझा मैं, इसका इंपॉर्टेंस समझा by telling you a story only, which is very much practical, and one should have these practical knowledges so that you grow interest कि अच्छा इसलिए पढ़ रहे हैं, कल मुझे भी ये काम आ सकता है. कहां पे सपोर्ट करना है? देखो, सपोर्टिंग इट एट इट्स सीजी. सीजी থেকে सपोर्ट করতে হয় যদি ওকে রেস্টে রাখতে হয় কোনো জিনিসকে. লিখে নিয়েছো? Now write this. लिखे नीचे, have you written this point? A body can be balanced in equilibrium, huh? By supporting it at its CG. अच्छा पीछे सोचना तुम्हारा तो ओके ठीक है. I had shown you this in the last class. लगी चलो मीटर स्केल. If you can see these readings, एक बार देखे ना, where have I attached this? দেখা যাচ্ছে গো কত সেন্টিমিটার? 50 सेंटीमीटर. मीटर स्केल में ना 100 सेंटीमीटर. नाउ आई हैव सपोर्टेड दिस बाय मींस ऑफ अ थ्रेड at the 50 centimeter mark of 100 out of 100 centimeter. That means at the middle point. अब छोड़ दे रहा हूं, लो मैं छोड़ दिया. ओ भाई घूमो मत, हाँ ऐसे रखो, घूमो मत. इधर या तो इधर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. और ये जो मोशन हो रहा है ना, घूम जा रहा है, ये दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी थिंग्स. इतना बड़ा अगर सोच लो तो ट्रक का करियर है, आई मीन कंटेनर है, एंड इफ इसको बोला था लोफिंग एक्शन, इंजीनियरिंग में बोर्ड में बोले. तो एनीवे, तो अगर ये घूम जाता वो अभी हम लोगों का डिस्कशन में नहीं है. डिस्कशन में है इज द स्केल टर्निंग इन दिस डायरेक्शन और दैट डायरेक्शन? नीदर, because it is keeping horizontal. Why? Because I have supported the scale at the point where CG lies. वही लिखा है ना ऊपर में, ऊपर की लिखा है? ওইটাই তো লেখা আছে এইখানে. सेम थिंग इज रिटन. मुखस्त करो ना फिजिक्स, अंडरस्टैंडिंग. भूल भी जाओगे ना, ओन लैंग्वेज लिख के आना एग्जाम में. इफ दैट इज लॉजिकली करेक्ट यू विल गेट फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम. Now let us move to the next point. अरे ये कौन है? फर्स्ट दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ये पढ़ो एक बार. What is written there? When a body is suspended freely from a point S, it comes to rest. Rest আসবে এটা.
in such a position that its CG lies vertically below the point of suspension. ओ इसलिए इसको S लिखा गया था. S stands for suspension point. That's why it is S. तो बोलने का मतलब है a body will stay at rest if point of suspension যেখান থেকে হ্যাং করছো point of suspension उसका vertically नीचे कौन रहेगा? CG. Then only body will remain at rest. Vertically नीचे अथवा vertically ऊपर. এইখানে কি হবে দেখো, vertically नीचे होता पारे, vertically ऊपर होता पारे. बुक में तुम लोगों का दिया हुआ नीचे, but keep in mind it may be above also. I can show you. So first let us understand this. This is a rim of a wheel. Wheel का rim है, rim RIM. तो वो रिम मोटा सा ऐसा है, वो हम लोग लेके ये पेंसिल का ऊपर हैंग कर दिया ऐसे. सो दिस इज द पेंसिल और इसका ऊपर ये रिंग हैंग हो गया ऐसे. अब ये तो ऑसिलेट करेगा ऐसे, इट विल ऑसिलेट. ऑसिलेट करते करते एक टाइम स्थिर हो जाएगा, रेस्ट. सो दैट दिस इज एस हियर, एस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो यहां पे क्या बोल रहा है इतना कुछ? दे वांट टू से that its center of gravity CG should lie vertically below this. ना ये साइड में ना ये साइड में, neither here nor here nor here nor here, कहीं पे भी नहीं रहेगा. It will be straight below this. And we know for a circular rim or ring its CG lies at the center. अब यह सर्कल का सेंटर और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम लाइन में होगा. दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई वर्टिकली बिलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ये वर्टिकली बिलो जो है, वर्टिकली बिलो, इट मे बी वर्टिकली अबव दैट पॉइंट ऑल्सो. कैसे? अब भी देखे तुम लोग, ये क्या था? ये तो वही था. यहां पे सपोर्ट कहां पे है? देखो सपोर्ट एक्चुअली अच्छे नीचे এইখানে यहां पे सपोर्ट है, ये पॉइंट. दिस इज द सपोर्ट. द सपोर्ट पॉइंट इज दिस लोअर एज ऑफ द स्केल. और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? मिडिल पॉइंट यहां पे, ओवर हियर. तो मिडिल पॉइंट का नीचे हो गया सपोर्ट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ऊपर भी हो सकता है इफ इट वाज अटैच्ड ओनली एट दिस हुक ओनली. बाकी एक चीज कॉमन है, whatever be that point of suspension, center of gravity और point of suspension ऊपर हो चाहे नीचे, सेम वर्टिकल लाइन में रहेगा. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस थिंग, वर्टिकल. आइडिया क्या सीखे? मैं लिख दे रहा हूं साइड में, वो भी लिख के रखो. एटाउ लिखे ना एंड राइट दिस थिंग आल्सो. CG, इजी लैंग्वेज. CG एंड S माने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, lie on same vertical line. इसको लिख के रखो, बस हो गया. lie on same vertical line. और लास्ट पॉइंट, for stable equilibrium of a body position of CG must be as low as possible. लास्ट पॉइंट छुट्टी. स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी में स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? I have placed this rectangular block, that is a cuboid, on a floor. ये टेबल को ऊपर रख दिया इसको ऐसे. ये इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट. हाँ रेस्ट में है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर मैं इफ आई डू दिस थिंग कि आई प्लेस दिस सेम थिंग बट इसको, अरे कहां जा, बट इसको मैं ऐसे रख दिया. कैसे? आजा 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 ऐसे. अच्छा छोड़ो, जैसा था रहने दो. मैं इसका ऐसे रख दिया. आई टूक अ सेकंड वन
and I placed it on the floor like this. Now tell me, which position will the body will have more peace in its life? I mean, more stable. Which position? One or two? Sir, 2. The Two. two. The two. Yes, very good. Two position. Yes, position 2 will be more stable. अब देखो तो मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं. बेस्ट है कि ड्रॉ करके बता दे रहा हूं and you will understand this. What center of gravity of this? यहां पे है. Center of gravity of this, total height যেটা ছিল না, total height वही तो अब सो गया है ऐसे. तो अब that has become length of that. I mean जो ऊपर था वो टेबल का सब पैरेलल. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे होगा कहीं पे मिडिल पॉइंट. यही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी এই লাইনটার উপর ছিল তো. Now that has come to this position. Yes. अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट यहाँ पे ज्यादा था. देखो, this was the height of the center of gravity. Suppose H1. And now इसको जब सुला दिया ना ऐसे, शुइए दीजो. Now the height of the center of gravity is this one. Which one is less? कौन सा कम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट? H1 ना H2? H2. H2. So this is more stable. तो इससे क्या आइडिया कर रहा हूं? इससे क्या आइडिया बना सकते हैं? देखो देखो इतने আমরা কি ডিসিশন নিতে পারি? কনক্লুশন ये है डिसीजन. For stable equilibrium of a body, position of CG, center of gravity, should be or must be as low as possible. So if you want to make something stable, height कम कर दो उसका. तो अमिताभ बच्चन less stable than Salman Khan. If they are of equal mass and size, then it's right. More the height, unstable. मैं एक example बोलता हूँ. Maybe you haven't have that experience. A ship, steamer, Ganga River. Steamer is reaching the shore. किनारा लग रहा है. किनारे के सामने जब आता है, people being impatient सब खड़ा हो जाते हैं कि आप उतरेंगे. And they are advised to please sit down. क्यों भाई? खड़ा होने से क्या प्रॉब्लम है तुमको? शोर आ रहा है, हमको उतरना है, हम खड़ा होंगे, मेरा मर्जी है. आप कौन है बोलने वाले कि बैठ जाओ? What happens there? क्या ना बोल? ये The शीप है. height of the ship. बोलो The बोलो. height of the ship increases and the ship becomes less stable. Very good. If this is the sheep, ठीक है, and people are sitting like this, ऐसे बैठा है आदमी, ऐसे बैठा था. अरे पैर की जगह से हाथ निकल रहा है. हाँ, ऐसे बैठा है. ये हेयर स्टाइल है, ठीक है. तो think of this कि this person ऐसे बैठा है. कैसे? कि ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है. ठीक है. This person is sitting here. This person, उसका हाथ अलग हो गया. This person is sitting here. This person is sitting here. इनका तो पैर अलग हो गया. भाई तुम्हारा पैर कहाँ गया? हाँ अब ठीक. अरे फिर से इसका पैर ये टांग के लेकर आया. ये यहाँ पे. हाँ. So, if these people start standing, तो समझ रहे हो कि क्या होने वाला है. ये लोग खड़े हो गए. अब ये बच्चन साहब है सबसे लंबा.
तो होगा यूं कि when these people were there 1 2 3 4 in their sitting positions, the boat and these people had their center of gravity at a certain position, दोनों का बीच में सपोज यहां पे था, ये मासेस लेके और नीचे का नाव का मास जो है दैट मींस द मास ऑफ द बोट मिला के यहां पे था सीजी. नाउ एज द पीपल स्टार्ट स्टैंडिंग अप, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन किधर हो रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर का तरफ बढ़ गया. एमनी छिलो मास माने बॉडी पार्ट्स. नाउ व्हेन द पीपल स्टार्ट स्टैंडिंग, तो मास ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, एंड वी नो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स मास डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ के आ जाएगा यहां पे. कल ये लाइन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, एंड न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड बी समवेयर ओवर हियर. तो एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप हो गया, इसका तो उल्टा हो गया. Must be as low as possible or it is increasing position of center of gravity. Low तो दूर का बात है, तो up हो जा रहा है. It creates an unstable equilibrium of the boat people system. तमाने बोट ऐसा ऐसा करना शुरू करेगा और it may topple even. ऐसा बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है. That's why they are asked to sit down. ये तो बुक में नहीं है. So with this idea and discussion, you will be able to answer other questions which are similar to this, even if they are not from book. And this year ICSE physics question, बहुत जनों को रुला दिया this year. But believe me, those who have understood physics, पेज का बाद पेज अंडरलाइन करके ये ब्रैकेट दे दिया, ये लाइन से यहां तक पढ़ लेना. हाँ, ये उस क्वेश्चन का आंसर है, उसके लिए प्रॉब्लम फिजिक्स में. एंड दोज हु अंडरस्टैंड विद एन ओपन माइंड कि आई अंडरस्टैंड द लॉजिक, अब क्वेश्चन दो ना घुमा के, आई आंसर इट, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड नीदर फॉर यू. तो एनीवे, जब इतना है बहुत है, अनेक सीखे गए. आई एम हैप्पी यू आर स्टेइंग विद मी एट दिस टाइम ऑफ नाइट. गुड नाइट, कल देखा होगा. बाय.